أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. My dear viewers, listeners and students, I say welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Our today's lecture is the continuation of the previous lecture, and that was on the revision. In the lecture 1, we have seen the introduction and relevant provision and scope of the scope and jurisdiction of the revision. So, rest of the material about the revision shall be seen inshallah in this lecture. So first of all, we will see the limitation for the revision. No bar of limitation can be placed against suo motu jurisdiction of revisional court. Maximum period allowed for filing the revision petition under section 115 of CPC by aggrieved person is 90 days after the declaration of the decree by the original court. So there are two different methods by which the revision can be filed or revision can be sent to the high court from the lower court or against the order of the lower court. If the aggrieved person is personally interested to initiate the proceedings of the revision in the high court, so soon after passing the decree by the original court is that court which has learned and listened and tried the entire trial of the proceedings. So after the passing of the decree of the original courts within the time span of the 90 days, the aggrieved person is bound to file the revision in the high court. Otherwise, after the lapse of the time, he will waste the right to file the revision. Number 2, we have already seen in the lecture number 1 that high court can suo motu take the cognizance of the revision under its revisional jurisdiction. So if high court wants to take the cognizance of the revision of any case, so for that very matter no time limit has been prescribed by the law, and the high court has the power to take the cognizance of the revision of any case at any time after the passing of the decree from the original court. Essential ingredients. The high court may call for record. High court shall call all the relevant record which is made by the original court or subordinate court. There must be a case which has been decided by any subordinate court. It means that against the running proceedings in the subordinate courts, no revision can be made, and the revision will only be entertained against the decisions of the lower courts. The case in which no appeal lies, it means that those cases against whom the facility or remedy of appeal is available, no revision can be made, and revision is only is applicable or can be made in those cases which are non-appealable. The High Court may make an appropriate order in the case as it thinks fit. It means that after the perusal of the record, the High Court will make the decision of the revision. Either the revision can be accepted or the revision can be rejected or struck off. The aggrieved person has to file an application to the High Court for filing the revision. The person who thinks himself aggrieved against the decision given by the trial court has to give the application to the High Court that he wants to file the revision petition.
The application must be supported by the relevant documents provided by the lower courts. The person who is filing the revision petition in the High Court is bound to annex all the documents which has been given by the lower court during the proceedings of the original jurisdiction. Essential ingredients मैंने आपको इसलिए बताए ताकि आपको पता लग जाए कि कौन कौन से ज़रूरी लवाजमात हैं। तो एक तो हाई कोर्ट मातहत अदालत का रिकॉर्ड मंगवाएगी, दूसरे किसी फैसला शुदा केस के ख़िलाफ़ रिवीजन की जाएगी। रिवीजन सिर्फ उन्हीं केसेस के ख़िलाफ़ की जाएगी जहां पर अपील का हक़ ना होगा, और हाई कोर्ट जो मुनासिब समझे फ़ैसला कर सकती है और रिवीजन को कबूल भी कर सकती है और रिवीजन को ख़ारिज भी कर सकती है। जो शख्स रिवीजन करना चाहता है वो बाकायदा से रिवीजन के हवाले से हाई कोर्ट में दरख्वास्त देगा, और इसके अलावा जितने भी मातहत अदालत के ज़रूरी दस्तावेज़ात होंगे उनको रिवीजन की दरख्वास्त के साथ लगवाया जाएगा। Grounds for revision: where the lower court has exercised a jurisdiction not vested in it by law. In other words, we can say use of the over jurisdiction, those jurisdictions or those powers which has been not given, not allotted to the lower court and has been exercised in a case. Against those matters a person can go for the revision in the High Court. Where the lower court has to fail to exercise a jurisdiction so vested, in other words we can say use of under jurisdiction, where the lower courts has the power and it was failed to exercise his already existing or vested powers. So in these cases where a person thinks himself as an aggrieved person due to the non-exercise of the powers which has been given by law to a trial court, so in those cases a person can go for the revision to the High Court. And third one is the where the lower court has acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity. In other words, we can say illegality or irregularity in the use of jurisdiction, where the trial court has irregularly interpreted its jurisdiction or has illegally used its jurisdiction, and after the use of illegal or irregular jurisdiction, if a person considers himself as an aggrieved person, so he can go to the High Court and file the revision petition. रिवीजन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ यही 3 ग्राउंड्स हैं कि जहां पर इख्तियारात दिए गए थे उनको इस्तेमाल न किया गया हो, या जहां पर कम इख्तियारात दिए गए थे उनसे बढ़कर इस्तेमाल किया गया हो, या फिर कोई बेकायदगी कर दी गई हो इख्तियारात के इस्तेमाल में, या फिर किसी किस्म की कोई कानूनी गलती कर दी गई हो, तो ऐसी सूरत में रिवीजन हाई कोर्ट में फ़ाइल की जा सकती है। Procedure for filing the revision in the High Court: the aggrieved person will make an application to High Court for the revision under this section, and the section is 115 के तहत सिविल कोड के हवाले से हाई कोर्ट में रिवीजन की दरख्वास्त दी जाएगी। द एप्लीकेशन शैल बी फॉलोड बाय द कॉपीज़ ऑफ द प्लीडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला और उसके साथ मुताल्लिका जितने भी तमाम दस्तावेज़ात थीं उनको रिविजनल कोर्ट में दायर करवाना, जमा करवाना ज़रूरी होगा, क्योंकि उसी की बुनियाद पर हाई कोर्ट अपना फ़ैसला देगी। आफ्टर हेयरिंग द रिवीजन प्रोसीडिंग द हाई कोर्ट शैल अनाउंस द डिसीजन विच विल बी द फाइनल, और रिवीजन को सुनने के बाद हाई कोर्ट अपना एक हतमी फ़ैसला देगी। लोअर कोर्ट शैल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ its decision within the 3 days. The High Court shall dispose of such application within 6 months as it receives. यहाँ पर आपको 2 मियादें बताई जा रही हैं कि अगर कोई
रिवीजन करना चाहता है तो फिर लोअर कोर्ट पाबंद है कि अपने फ़ैसले की और उससे मुतल्लिका तमाम दस्तावेज़ात की कापियाँ उसको 3 दिन के अंदर फराहम करे फ़ैसला होने के बाद। और इसके बाद हाई कोर्ट में जब एक दफ़ा रिवीजन दायर कर दी जाए तो हाई कोर्ट 6 माह के अंदर अंदर उस रिवीजन का तस्वीया करेगा। Dear conclusion, there are some conditions in which the revisional jurisdiction is exercised. The case must be decided by the lower court. There should be no remedy of appeal to be exercised. The revision is the discretionary power of the higher court. सबसे पहली बात तो ये है कि रिवीजन को एक्सेप्ट करवाने के लिए एक पहले से मातहत अदालत का तयशुदा फ़ैसला हो, जिस फैसले को बतौर रिवीजन हायर कोर्ट में ले जाना हो, और उसके बाद इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील का हक़ मौजूद न हो। और तीसरी बात ये कि अब डिस्क्रेशनरी पावर है, यानी कि हाई कोर्ट का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो मैटर्स ऑफ रिवीजन को एंटरटेन करे या ना करे, मतलब इसको मैटर ऑफ राइट के तौर पर, अपील के तौर पर इंडोर्स नहीं करवाया जा सकता। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। My dear viewers, listeners and students, I say welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Our today's lecture is the continuation of the previous lecture, and that was on the revision. So